Pediatric revision for growth and development, then we will going to milestones of a baby, and then we will starting with adolescent changes. Basically the growth, it is an increase in a size or a mass of a tissue, and development, which is the maturation of the function. So but when we call a zygote, it is the first 2 weeks, which is a product of the conception. Embryo, it is 2 to 8 weeks. Fetus, it is a 9th week onward. There is a question of a prenatal period. It is between the 22-week gestation till the 7th day of post birth. Newborn baby or neonate, we called as the first 28 days of an life, and infant, it is called as the first year of an life. First whole year of an life is known as infant. Toddler, it is 1 to 3 years, and preschool is 3 to 6 years, and school age, which is 6 to 12 years of an age. Adolescence is considered into 3, that is early, middle, and late. Early, it is 10 to 13 years, middle, it is 14 to 16 years, and late, it is 17 to 19 years. So basically the human growth has a 2 character. It is cephalocaudal, which is from head to tail, and distal to proximal, that is from the distal phalanges to the proximal, going towards the shoulder. The growth curve is also known as a Scammonn's curve, and it is in the somatic growth, which is a S-shaped. Brain growth, 90% of the brain growth has been developed in the second year of a life of a baby, whereas lymphoid growth in this way, whereas the maximum lymphoid growth of a baby occur at 4 to 8 years of a life, whereas hormones which are dependent for the fetal growth are insulin, thyroxine, glucocorticoid. There is no or minimal role of a growth hormone, whereas all these involved in the importance in a growth hormone, like growth of a baby. And gonadal growth will be in this way, and thyroxine secretion in the intrauterine life, in the 12th intrauterine life it happens. So next come anthropometry. There will be weight of a baby will be, suppose initial weight will be, birth weight is an X. So in the first 7 days of a life, there will be 10% loss of a body weight, and after 7 to 10 days, that birth weight will be gained at that time he was birthed, and then 11th day onward there will be an increased visible weight gain, which is 25 to 40 grams per day. So in a term baby, if the weight loss is more than 10%, weight loss is more than, for a baby who is in a term baby whose weight loss is more than 10%, it is because main cause is because of dehydration, which is because of inadequate feeding of any child. If the weight gain is instead of a weight loss, he is gaining a weight instead of weight loss, the most common cause is a fluid retention in the body, and fluid retention is most common cause is pituitary ductus arteriosus in the baby. Weight pattern beyond the 3 months by the Veach formula. For the 3 to 12 month of a baby, we will go for a formula age of a baby in month plus 9 divided by 2. For 1 to 6 year, there will be expected weight will be age in years multiplied by 2 plus 8, and 7 to 12 years of an age, expected weight will be age in years multiplied by 7 divided by 2 minus 5. Now comes a Reddy-Reckon's formula. Reddy-Reckon's reckoners for the weight. Reddy-Reckon's weight will be, suppose at the time of birth, it is X. So at a 5 month, it will be twice the weight, and first year it will be thrice, second year it will be 4 times, 3 year 5 times, and 10 year it will be 10 times. Next anthropometry will be for height and length gain pattern. For a baby who is less than 2 years of an age, we will go for infantometer. This is infantometer, whereas standing straight and whose standing straight stadiometer will be used for more than 2 years. At the birth, the length must be 50 centimeter for a baby, which is considered as normal, but at a 4 year of age it will be doubled. Expected height formula will be age multiplied by 6 multiplied by 7.7. Height velocity pattern. From 0 to 6 months of an age, there will be 16 centimeter gain. 6 to 12 years it will be 9 centimeter gain, and 5 to 10 years it will be 5 to 6 centimeter age. It is the previous year question. So 1 to 2 year it will be 12 centimeter. 1 to 2 हो गया तो 12 आ गया, और 2 से 5 हो गया 6 हो गया. टारगेटेड हाइट क्या होगी कि मिड पेरेंटल हाइट होगी, पेरेंटल हाइट प्लस फादर हाइट डिवाइड बाय 2. इफ इट इज अ बॉय एट 6.5, इफ इट इज गर्ल देन माइनस 6.5. हेड सर्कमफ्रेंस और ऑल्सो नोन एज OFC, ओसिपिटो फ्रंटस सर्कमफ्रेंस. हेड हमेशा ही बर्थ में 3 सेंटीमीटर का गैप होता है, जिसका मतलब ये कि एट द टाइम ऑफ एन बर्थ द हेड सर्कमफ्रेंस मस्ट बी मोर देन 3 सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू द चेस्ट सर्कमफ्रेंस. द डिफरेंस मस्ट बी 3 सेंटीमीटर. Head circumference increase for the first 3 months, it will be 2 centimeter per
month means at the end of 3 month 6 centimeter must be increased. At the next 8 month 1 centimeter every month. 7 to 12 month it is 0.5 centimeter. 1 to 3 month it will be 1 centimeter every 6 month, and 3 to 5 year it is 1 centimeter every year. If at the time of birth head circumference difference of head and chest circumference is more than 3 centimeter, इसका मतलब यही है कि या तो सर बड़ा है या फिर छाती कम है. तो फिर बट so basically her head circumference and chest circumference at the 9th to 12 month of an age it will be equal, and after 12 months chest circumference will be increasing. Tricep folds, tricep skin fold thickness fourth will be this, and Harpender caliper must be used for the skin fold. For normal child the thickness must be more than 10 mm, whereas for the undernourished it will be 8 to 10, moderate it will be 6 to 8, and severe malnutrition it will be less than 6 mm. Now coming on the milestones, there are basically 6 rules. 6 rule which is the development is a continuous process. First second will be for the development CNS maturation must cephalocaudal progression will be there in the development, and primitive reflex must be lost as the further he will develop. And initially the reflex are very general true, that is they are less complex, but as it progresses it will become more complex and similar sequence in all the children. Now coming on the gross motor development, there will be neck control or head control, head holding. Partial will be 2 months. First if you will do the pull to sit maneuver, if the age is less than 3 months of an age, there will be lagging in this. There will be partial head control in the 2 month and complete after 3 to 4 months. If we will be doing pull to, this is the pull to sit maneuver. If we will doing pull to sit maneuver, he will be having if he is having complete head lag, this means that age is around 2 months. If it is having no head lag, age will be 4 months. Second, the most common that children do, that is suck his own great toe, which occur at a 5th month of an age. He will take his feet to the mouth in a supine position, sitting in his own support, that is tripod position. It occur in the 6th month of an age. And roll over begin at 4 to 6 months, that is on the back. He is on the back and going to the side, and from the side to the back. From the prone position he is coming to the supine position, then it is in the 6th month of an age. And if he is in supine position, that is his face is lying in this way, and supine to prone position is in the 7th month of an age. Other, it is sitting with support. He will be sitting with support at the age of 8 month. Crawling will be occur in 8 to 9 month. He will be having a dirty, his stomach will be having a dirt. In this way we can see that crawling. And creeping, that is his stomach is not on the ground. So basically he is creeping in the 9 to 10 month of an age. With the support at the 9th month he will be standing. And pivoting, that is only rotating his sitting position. He will only rotate it by the sitting position. This is known as pivoting in the 9 to 10 month of an age. And cruising, that is cruising will be he will holding to the furniture and will be able to stand means he will be able to, with the help of furniture, he will be standing in the 11 month of an age. मीन्स ही विल बी क्रूजिंग मीन्स मतलब कि वो जा रहा होगा पकड़ के दीवार को. स्टैंड विद द सपोर्ट. Stand with the support comes at a 12 month of an age, as well as walking with the support at the 12 month of an age. Without support he can go in 15 month, and running he will be in 18 month. पीछे की तरफ चल रहा होगा 2 ईयर में. राइट साइकिल बाइसाइकिल चलाएगा. 3 ईयर में हॉपिंग करेगा 1 फुट पे जैसे कि खेलते हैं जो 4th ईयर में. और स्किपिंग रॉप कर पाएगा 5 ईयर में. टो वॉकिंग फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होएगा 15 to 18 मंथ में. इडियोपैथिक होएगा अगर ये बियॉन्ड नहीं होना चाहिए 2 से 3 साल में. और टो वॉकिंग ऑन कमांड किसी को भी कह सकते हैं, तो टो पे वॉक कर सकता है, विच इज़ इन द 30 मंथ ऑफ एन एज. क्रोल एंड क्रीप अपस्टेयर्स. क्रोल क्रीप करके अपस्टेयर्स जाएगा 15 मंथ ऑफ एन एज में. गोज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होल्डिंग सपोर्ट से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा 18 मंथ ऑफ एन एज में. गोज अप एंड अलोन विद 2 feet पर स्टेप, मतलब कि पहले एक पैर रखेगा उसी स्टेप पे और दूसरा पैर उसी स्टेप पे आएगा, तब इसको कहते हैं 2 feet पर स्टेप. ये होएगा 2 ईयर ऑफ एन एज में. एंड गोज अपवर्ड अल्टरनेट, एक स्टेप पे एक पैर, अगले दूसरे वाले पे दूसरा पैर. सो ये होएगा 3 ईयर 36 मंथ ऑफ एन एज. ऊपर की तरफ चला जाएगा 4 ईयर ऑफ एज में. अल्टरनेट पैर को कहेंगे, अल्टरनेट स्टेप भी बोलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू फाइन मोटर डेवलपमेंट.
सो इन फाइन मोटर डेवलपमेंट नथिंग, फाइन मोटर डेवलपमेंट 3 मंथ की एज से पहले नहीं होता। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा, मतलब कि 3 मंथ के बाद ही होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिसमें क्या आएगा, माउथ ऑब्जेक्ट में डालेगा 4 to 6, ऑब्जेक्ट मुंह में डालेगा 4 to 6 मंथ में। बाइट एक्स्ट्राटीज मतलब कि दोनों हाथ को यूज़ करेगा, इट विल बी कमिंग एट 4 मंथ। यूनिट एक्स्ट्राटीज एक हाथ से ही पहुँचने की कोशिश करेगा 6 मंथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करेगा 6 मंथ में। पाल्मर ग्रैस्प he will be grabbing in this way and it will be in 6 month, and radial approach will be 8 month. Pincer grasp which is immature in this way, he will be not holding by this is the pincer grab he will getting in the 9 month of an age, and mature grab, that is he will be using his digits at the 12 month of an age, and scribbling like he will be doing in this way in the 15 to 18 month of an age. फिगर मेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन 18 मंथ में बनाएगा, वर्टिकल लाइन बनाएगा 18 मंथ ऑफ एन एज में, हॉरिजॉन्टल बनाएगा 24, सर्कल बनाएगा 3 years ऑफ एन एज, दिस इज़ नोन एज क्रॉस आएगा 4 year ऑफ एज में, रेक्टेंगल आएगा 4 to 4.5 year ऑफ एज, ट्राइंगल 5 year में, और रोम्बस 6 year ऑफ एज में। सो बेसिकली क्रॉस बनाता है 4 year ऑफ एज में, प्रीवियस क्वेश्चन है। और प्रिंसर ग्रेस मैंने बताया कि 9 month ऑफ एज में ये ऐसे पकड़ेगा, ऐसे, दिस इज नोन एज सीजर ग्रिप। The blocks he will be making two cube tower 15 month में, 3 cube tower he will be making in 18 month, 6 to 7 cube tower 2 years, 9 to 10 cube tower 36 month में। and train making he will be making, these are the horizontal train he will be making without chimney in the 2 years of, and with chimney 2.5 year, and bridges of the 3 cubes, 3 cube बना रहा है 3 year में, ये बना रहा है 5 cube बना रहा है 4 year में, और staircase will be making in the 5 and 6 half। लैंग्वेज क्या होता है, 3 month ऑफ एन एज में क्वीन करेगा, 4 month में लाफ लाउडली, 6th में मोनोसिलेबस यूज़ करेगा, मोनोसिलेबल वर्ड्स, 6 to 7 एज में बैपली भी करेगा, मापा बाइसिलेबल वर्ड्स हैं विच विल बी यूजिंग इन 9 month ऑफ एन एज, एंड फर्स्ट रियल वर्ड विल बी यूजिंग इन 12 month ऑफ एन एज। 15 month में जैगरन स्पीच करेगा, मीन्स दैट इंस्टेड लाइक ही विल बी यूजिंग फॉर वाटर, इफ यू वांट अ वाटर ही विल बी यूजिंग सम अदर वर्ड लाइक मम और समथिंग लाइक दिस इज नोन एज जैगरन स्पीच, दैट इज न्यू वर्ड टू द कम्युनिकेशन। एंड 18 month ऑफ एन एज ही विल बी यूजिंग 8 to 10 words, and 2 years of an age vocabulary increasing to the 100 words, and speaking 2-word sentence like ma shoe he will be using 2-word sentence which will make sense. If he need like shoes he will simply say like ma shoe in this way. And 3 year of an age he will be able to comprehend like name, age, sex, and vocabulary of 250 words, and speaking 6 syllable word. Similarly in the 4th year of age he will be using past sentence, simply story, song, and poem he will use. That is why at 4 year of age they are rhyming, so whatever that poems they are using. At 5th year of age he will be using future tenses, tenses and 10 syllable words. Now the person's social life, spontaneous smile, neonatal period में spontaneous smile करेगा, that is 1 to 28 days. Spontaneous smile like we will see that the child is sleeping and he is giving a smile. Social smile he will be passing 2 month of an age, but at the 3 month of an age he was able to recognize his mother. And hand regard, that is he is looking for his own hand, like he's making comprehend like what does it hand, what like why is this, it will begin in the 12th week and stop by the 20th week. And smiling at the mirror will be at a 5 month of an age, whereas if he is going to play like which is known as mirror play, mirror के सामने जाके खेलता है तो 6 month of age में. Stranger anxiety, it is an important question which will come at a 6 to 7 month of an age. And objects permanency and consistency, he will know that if we will hide some object, he will know that it is a permanent and it is not gone, so he will be amazed by this. And at the 9 month of an age, and peekaboo will become after that at 10 month of an age. सिंगल बॉल गेम खेल सकता है 12 month ऑफ एन एज में, और डोमेस्टिक मिमिक्री 18 month में कर लेगा. फीडिंग विद स्पून विच ही विल स्पिल मोस्ट, इट विल बी अकर इन 15 month, whereas in 18 month he will be eat the most. And using knife and fork will be occur in 36, which is 3 year of an age. Interaction, he will be hugging the parents at the 15 month and kissing the parents at 18 month, and 18 you know that 18 years of an age what we have to do. Separation anxiety will be more in 18 month of an age, and there will be parallel play, he will be doing 2 to 3 years, and pretending play 30 months of an age. Whereas cooperative play he will be doing in 3 years of an age, and role play in the 4 year. Dressing with support he will be start doing in 2 years, whereas dressing with
undressing he will be start in the 2 years with the support, and dressing with support in 3 years, and 5 year of age he was able to dress himself and undress himself independently, and tying the shoelace also he can do. Handedness will become in 3 years of age, whereas in 4 year of age he will able to discriminate with the right-handed and left-handed visions. Now coming on vision and hearing test, if we have to check for the milestone, for the vision we have to check that vision we are checking that the object must be around 8 to 10 inches away from the baby. So at the birth he will follow only the 45 degree, and at the 4th week he will follow to the 90 degree, and like he will birth he can see till the 45 degree, whereas in the 4th week he will able to 90 degree, and 12th week 3 month of an age he will doing all the 180 degree. 4 month he will be going for binocular vision and hearing. First that hearing will be neonate will start like startle response will be there, like if there is a loud noise he will be startled and he will be in fear. And 4 month he will localize horizontally, only horizontally he will be localized, and 5 to 6 month of an age he will localize horizontally as well as vertically, and 7th month of an age he will be vertically, he can localize a sound, and 10th month he will be simply doing diagonally, he can localize a sound. Neonate in the prone position, 2 week में क्या होगा, legs will be folded and pelvis will be lifted. at 6 week में baby जैसे हम सोते हैं वैसे कर पाएगा, जो कि मतलब है legs straight होंगे, pelvis horizontal होगा. 3 month में that head lifted head and shoulder, and he can bear his weight, whereas these elbows must be flexed, and 6 month of an age he can bear his own arm, that his elbows are extended. When the baby is suspended, suppose here is a baby and he is suspended over in a prone position. In a prone position he will be in this way. So neonate heads legs down, and in 4th month of an age he will lift momentarily. 1 month of an age he will momentarily, and he will drop down. 2 month of age he will lift it sustained at the plane of body, and 3 month he can upward. These milestones, what are the implications for the gross motor? If there is no head leg to pull to say, that is baby must be around 4 weeks. So basically that he will be the baby will be around 4 months. So this indicate, if there is no head leg, it indicate that muscle tone adequacy is there, hands in midline is there, it means self discovery of hand. Sit walk without support, it means allow to explore. This implicates allow to explore. Fine motor development, if he is reaching out for an object, it indicates visuomotor coordination. Transfer of object from one hand to other, it means it is a comparison of an object. Pincer grasp he is doing, that ability to explore and manipulate small objects. Scribbling, visual and motor coordination is doing. Tower of 2 cubes at 15 month of an age, which came ability to use object in coordination. And tower of 6, which I have told you, 6 year of 6 tower he can make in 2 years of life. So ability to use coordination. Both means if he is making tower of 6 cube, he has implicates that gross motor, fine motor and visual coordination are developed. Language, if he is using monosyllable word, this means that he is experiment with the sound, and bisyllable word, expression with the sound. Personal social, that is if we will playing with him with uncovers a toys or peekaboo, the ability to understand the object's premises, right? That presence is object there is the presence. Red flag sign means that till the 2 month of an age visual fixation must be there. This means that there is some, दिस इज़ द अपर लिमिटेशन, लाइक मीन्स कि 2 महीने तक विजुअल फिक्सेशन नहीं होना चाहिए. वोकलाइजेशन 6 मंथ के एंड तक नहीं होना चाहिए. सीटिंग विदाउट सपोर्ट 10 मंथ नहीं होना चाहिए. वी हैव टू चेक लाइक व्हाट्स नॉर्मलिटी. स्टैंडिंग विद सपोर्ट इट विल बी 12 मंथ, एंड ऑल द 18 मंथ, दैट इज स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, यूजिंग simple or single word till the 18 month of an age, this is a red flag. Imaginable play till the 3 year, it is a red flag.
Basically terminology, it is development dissociation. 3 terminology: development deviation, development regression. Development dissociation, that is whenever there is a variation in milestone across the 2 domains, it is developmental dissociation. Deviation like in cerebral palsy, that is मतलब कि अगर कोई माइलस्टोन पहले 4 मंथ की एज में आना होता है वो 6 मंथ की एज में आ रहा है, और जो 8th मंथ की एज में आ रहा है वो 4 मंथ की एज में आ रहा है. सो दिस इज द डेवलपमेंट डेविएशन. एंड डेवलपमेंट रिग्रेशन, इट इज़ अ लॉस ऑफ प्रीवियसली अटेंड milestone. It occur in Rett syndrome, mitochondrial disorders and SSP. नाउ वी विल डेवलपमेंट क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन. बेसिकली इसमें क्या करना है कि नीचे वाली जो गिवन एज है वो करनी है, और डेवलप्ड एज जो उसकी डेवलपमेंट एज है वो निकालनी है, और क्रॉनिकल एज जो उसकी अभी एज है जैसे कि 12 महीने का है तो 12 × 100. सेम इसी में इंटेलिजेंस में भी. मोस्ट कॉमन जेनेटिक फैक्टर जो मेंटल रिटार्डेशन करते हैं और डाउन सिंड्रोम है. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इन द फ्रेजाइल सिंड्रोम, और मोस्ट प्रिवेंटेबल कोज इट इज कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म. मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलिजेंट डिसफंक्शन कंजेनिटल हो सकता है IEM में, न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम, टॉर्च इन्फेक्शन, और जेनेटिक हो सकता है. एक्वायर्ड में CNS इन्फेक्शन, CNS हेमरेज, एस्फिक्सिया, सीवियर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया, कर्निक्टेरस एंड टॉक्सिक मेडिएटेड हो सकता है. देर इज़ असेसमेंट इफ टेक द फॉर असेसमेंट इन अ प्रीटर्म. जो प्रीटर्म बेबी होंगे उसमें हमने करेक्टेड एज निकालनी. करेक्टेड एज कैसे निकलेंगे? सपोज अ बेबी इज़ 2 month of an age, दिस मीन्स दैट ही इज़ 8 month of an 8. So let's take here take 4 month of an baby who is preterm, who is delivered at the 28 weeks. 28 वीक्स में हुआ था तो कितने रह गए? 12 महीने उसके रह गए थे, तो माइनस कर देंगे करंट एज को. जितने महीने रह गए थे उसमें से इतनी उसकी करंट एज आ जाएगी. डेवलपमेंट असिस्टेंट टेस्ट स्क्रीनिंग और डेफिनेट होता है. स्क्रीनिंग में क्या आएगा? गुड इनफ हैरिसन टेस्ट आएगा, डेनेवियर 2 आएगा, फाटेक्स बोरोडा टेस्ट आएगा, त्रिवेंद्रम स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा. डेफिनेट में बेली टेस्ट आएगा, बेली टेस्ट आएगा, और बेली 2 टेस्ट आएगा. विलैंड एडेप्टेशन बिहेवियर टेस्ट आएगा, स्टैनफोर्ड बिविट, और वेशलर इंटेलिजेंस ट्रायल आएगा. नाउ कमिंग ऑन थर्ड टॉपिक विच इज़ द प्यूबर्टल चेंजेस. फीमेल्स में क्या होता है? टिलाके आता है जिसमें ऑनसेट होती है ब्रेस्ट बड की. टिलाके इट इज़ अ प्रोसेस बिटवीन 8 years to 12 years. उसके बाद प्यूबाके आता है, प्यूबाके विच इज़ ऑनसेट ऑफ प्यूबिक हेयर. फिर मेनाके आता है. Basically in this pubertal growth there is a growth spurt, means there will be increase in height as well as puberty changes will begin in this period. So the first visible sign of this changes growth spurt is in Telake, but peak growth spurt it is between the pubic and the menarche. pubic क्या है? pubic hairs का आना होता है. menarche होता है 2.5 या 3 साल के बाद आता है. menarche आता है 2.5 या 3 years टेलार्के के बाद आता है. सो दिस इज़ द सेक्सुअल मेच्योरिटी रेटिंग. दिस इज नोन एज टेनर्स और SMR स्टेजिंग इन फीमेल्स. फर्स्ट स्टेज में कोई भी प्यूबिक हेयर चेंज नहीं होते. ब्रेस्ट चेंज विल प्री एडोलेसेंस. सेकंड स्टेज में द प्यूबिक हेयर्स विल बी स्पेयर, विल बी स्ट्रेट. और थर्ड स्टेज में इट विल बी लाइक बिगिन टू कर्ल. बेसिकली सेकंड स्टेज में ब्रेस्ट में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते. सेकंड स्टेज ही एक्चुअल प्यूबर्टी बिगिनिंग होती है. थर्ड स्टेज में ये डार्कर बनते हैं और ब्रेस्ट एरियोला एनलार्ज होते हैं, लेकिन सेपरेशन नहीं होती ब्रेस्ट की और एरियोला की. फोर्थ में देयर विल बी कर्ली प्रेजेंट होंगे लेकिन मीडियल थाई में नहीं होंगे. और देयर विल बी सेकंड माउंट, मतलब कि एरियोला और निपल विल बी सेकेंडरी माउंट ओवर द ब्रेस्ट. फिफ्थ में क्या होगा? देयर विल बी नो सेपरेशन बिटवीन द एरियोला एंड निपल, and so the mature breast nipple projects but areola is a part of areola general breast का contour बन जाएगा. और इसमें फिफ्थ स्टेज में मिडल थाई में हेयर आ जाएंगे. in males a sequence start with testicular enlargement. सबसे important ये है कि testicular enlargement से sequence start हो रहा है. ठीक है. प्यूबर्टिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होएगा टेस्टिकल एनलार्जमेंट से, जिसमें कि उसके बाद प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होएगा, पेनाइल डेवलपमेंट होएगा, और अल्टीमेटली देयर विल बी एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट एंड फिर फेशियल हेयर आएंगे. जो फीमेल्स में क्या होता है कि पीक ग्रोथ आती है, जो ग्रोथ स्पॉट होता है वो लेट आता है मेल्स में, लेकिन उसकी पीक ज़्यादा होती है. 1 से 2 साल लेट होता है ग्रोथ स्पॉट, लेकिन उसकी पीक फीमेल से ज़्यादा होती है. एक स्टेज में फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं होता है, सारा प्री एडोलेसेंट होता है. सेकंड स्टेज में क्या होगा? स्ट्रेट प्यूबिक हेयर्स होंगे लेकिन पिंक स्क्रोटम होगा सेकंड स्टेज में. और वैसे ही थर्ड स्टेज में क्या होगा? डार्क हेयर होंगे, कर्लिंग स्टार्ट हो जाएंगी. फोर्थ में कर्ल हो जाएंगे
और जो पीनस की ब्रेथ होगी वो इंक्रीज़ होगी और ग्लैंस का भी साइज़ इंक्रीज़ होएगा। थर्ड स्टेज में लेंथ इंक्रीज़ हो रही थी पीनस की और वॉल्यूम टेस्टिस का बढ़ रहा था। और फोर्थ स्टेज में जैसे कि फीमेल्स में भी कर्ली हो जाते हैं और इसमें भी अबंडेंट होते हैं, ब्रेथ इसमें इंक्रीज होने लग जाती है और देयर विल बी डार्क पिगमेंटेड। सेकंड स्टेज में पिंक स्क्रोटम था, फोर्थ में डार्क पिगमेंटेड स्क्रोटम है, फिफ्थ में एडल्ट साइज़ हो जाएगा और एडल्ट साइज़ में टेस्टिकुलर वॉल्यूम 16 ml से ज़्यादा होएगा और ये चेक करेंगे हम ऑर्काइटोमीटर से। So telarche began at 8 to 12 years of age. Menarche, which is the third stage, occur 2.5 to 3 years after telarche around SMR stage 3. Testicular enlargement बड़े enlargement होने लग जाता है 9 to 10 years में। पीक ग्रोथ वेलोसिटी फीमेल्स में कब आती है, जो कि होती है 9 सेंटीमीटर पर ईयर, जो कि सेकेंड और थर्ड स्टेज में होती है। और इंडियंस में थर्ड स्टेज में ही पीक ग्रोथ वेलोसिटी होती है और मेल्स में 3 और 4th में होती है। SMR स्टेजिंग में 10 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, लेकिन इंडियंस में 4th SMR स्टेजिंग वी विल कंसीडर। So basically now the fourth topic is neonatal skull, in which we will consider skull में frontales होते हैं। Frontales, this is the metopic suture, this is the sagittal suture, coronal suture, frontal bones, this is parietal bones, this is the lambdoid, this is the posterior frontal and this is the lambdoid suture। ये है lambdoid suture। anterior frontal diamond shape का होता है at the time of birth 2.5 centimeter multiply by 2.5 centimeter। always we have to go from side to side, never at from the corner। normal closure time होता है 12 to 18 month होता है। और suture जो form करते हैं उसका निमोनिक है SCM, which will be sagittal, metotic suture and coronal sutures। lambdoid suture is not involved in the frontanel। abnormality क्या होगी, if there is a delayed closure, अगर late closure हो रहा है more than 18 months के बाद close हो रहा है तो idiopathic cause हो सकता है, rickets हो सकता है, hyperthyroidism हो सकता है, PEM हो सकता है, which is then there will be achondroplasia and osteogenic imperfecta will be the causes if there is a delay in the closure of the anterior frontanels। and if there is a premature closure, is it known as craniosynostosis। so craniosynostosis it will be premature closure, मतलब कि 1 साल से पहले ही क्लोज हो जाए तो craniosynostosis कहते हैं उसको। and maybe there will be these are what we are talking about, these are abnormalities। पहले क्लोज हो जाए या फिर डिप्रेस हो जाए एंटीरियर फ्रंटनल मेनली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। बल्जिंग हो जाए एंटीरियर फ्रंटनल की, कैन बी ट्रांजिएंट इन केस ऑफ फोर्सफुल क्राइंग। इफ फोर्सफुल क्राइंग ऑफ द बेबी विल बी देयर विल बी बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटनल और बेसिकली बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर causes bulging also and which will be considered under the hydrocephalus। CNS hemorrhage भी हो सकता है, CNS infection भी हो सकता है। एंटीरियर फ्रंटनल सबसे लास्ट में क्लोजर होने में होता है। posterior fontanel it is either at the time of birth में क्लोज रहता है या फिर at the 2 month of an age it will be closed।